हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पिछले 6 से 12 महीनों में टाटा मोटर्स का जो ये छलांग है ऊपर की तरफ जा रहा है। वजह एसयूवीज, चाहे वो पंच हो, नेक्सॉन हो या सफारी हैरियर, इन गाड़ियों ने टाटा मोटर्स का रुख बदल के रख दिया है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर राजन आंबा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मार्केटिंग एंड कस्टमर केयर के हेड हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से। और हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल एडिशन की, काजीरंगा एडिशन, जो कि टाटा मोटर्स के एसयूवी लाइनअप में आज इंट्रोड्यूस हो चुकी है। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू अनिर्बान, थैंक यू वेरी मच। सर, थोड़ा अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसके पीछे अंडरलाइंग रीजन क्या है, काजीरंगा एडिशन लॉन्च क्यों किया गया है? अनिर्बान, क्वाइट सिंपल ये चीज़ है। अगर आपने हमारी हिस्ट्री फॉलो की है पिछले 1-1.5 साल में, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी तरह के स्पेशल एडिशंस हमने लॉन्च किए हैं मार्केट को एक्साइट करने के लिए। अपना डिज़ाइन का जो सुपीरियॉरिटी है, जो हमारा थिंकिंग है, जो हमारा स्ट्रेटजी है, उसको कंज्यूमर्स के पास लाने के लिए। और ऐसे जो हमने जो रिस्पॉन्स देखा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम डार्क एडिशन, ये जो रिस्पॉन्स है इसने हमको काफ़ी इंकरेजमेंट दिया है कि हम नए नए ऐसे स्पेशल एडिशन लाएं जो हटके हैं, जो जिनमें कई तरह के यूनिकनेसेस हैं। और ये जो काजीरंगा एडिशन है हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे कंट्री की इतनी रिच नेचुरल हिस्ट्री और डाइवर्सिटी है और इतने इंस्पिरेशन है अक्रॉस द कंट्री, you know, whether it's our forest reserves, whether it's our temples, or it's our architecture, or it's so on and so forth. So the first step for us in taking inspiration was to look at the natural beauty of this country, and हमने काजीरंगा को select किया because we also wanted to celebrate the one horn rhino for which Kaziranga is known. एंड हमारे डिज़ाइनर्स ने जो इंस्पिरेशन ली है वो ट्रांसलेट करती है इन द एक्सटीरियर्स ऑफ द कार, द कलर्स ऑफ द कार फ्रॉम द आउटसाइड, एज वेल एज जो इंटीरियर्स के कलर्स हैं और जो कलर स्टोरी है, जो इंस्पिरेशन वहाँ आपको दिखेगा जब आप गाड़ी देखेंगे, जब आप गाड़ी में बैठेंगे। और द यूनिक यूजेज ऑफ द राइनो मैस्कॉट which has been celebrated by various insertions across from the outside to the inside of the car. तो ये हमारा जर्नी है, इस ब्रांड का जर्नी है। ये हमारा इंडेवर है कि हम इंटरेस्टिंग चीज़ें बार बार लेके आएँ कंज्यूमर्स को एक्साइट करने के लिए, जिनके अराउंड स्टोरीज होती हैं, यू नो, which customers can relate to, and we hope that our customers enjoy this edition and think that we have done due justice to Kaziranga. जरूर सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू एडिशन। सर, थोड़ी पोजीशनिंग की बात कर लेते हैं। यू हैव मल्टीपल एडिशंस। इफ यू लुक एट सफारी या हैरियर, वहाँ पे डार्क आता है, पर्सोना आता है, एडवेंचर आता है। तो काजीरंगा का प्लेसमेंट कैसा होगा? इज इट टॉप ऑफ द लाइन या कहीं बीच में स्लॉट होगी? No, this is a top of the line. We have taken the best of across our cars, across our SUV models, Punch, the Nexon, the Safari and the Harrier. And we have given it the Kaziranga twist, if I might say, if I can use that phrase. And therefore it is in the top of the line in that sense. And it also coincidentally celebrates हमारा number one position जो SUV हमने पिछले 4 महीने में देखा है, with almost 100,000 units sold in that segment and 22% market share. It is a wonderful time to actually for us to celebrate that through the launch of the Kaziranga edition. आपको ये तो मालूम ही है कि Nexon is in the top 10. I think it's number 7 in across all models sold in this country in terms of its sale. It is the number one brand in the compact SUV segment. And Punch also, you will see it coming into this when the new year starts, because we introduced it in the market late, right? But it's been clocking about 10,000 units a month on an average over the last 3-4 months. So you can see that the Punch is there in the top 10, Nexon is there in the top 10 of the compact SUV segment. जो हमारा Safari and Harrier है, they also enjoy approximately a 35% share of the high SUV segment, and totally we have about 22% market share of the SUV segment. So clearly, and this is with only many of the launches happened only in the last 4-5 months, right? So we hope and we think that there is बहुत potential है इस कैटेगरी का, SUV का और इस सेगमेंट का। और जो हमारी गाड़ियां हैं, they truly reflect the definition of SUV.
बिल्कुल सर। सर मतलब सेल्स के नंबर्स ऑब्वियसली दर्शा रहे हैं कैसे टाटा मोटर्स एसयूवी पोर्टफोलियो से अच्छा नाम कमा रही है, ब्रांड वैल्यू का एडिशन हो रहा है। सर थोड़ा मुझे डिस्ट्रीब्यूशन जानना था कि किस टाइप की ट्रिम लाइंस जनरली ओनर्स खरीद रहे हैं। इज इट टॉप ऑफ द लाइन, कितना परसेंटेज स्प्लिट है बिटवीन मिड वेरिएंट या टॉप वेरिएंट में, कितना ज्यादा आकर्षण हो रहा है? अनिल, मैं आपको ऐसे कहूंगा कि जो हमने देखा है एटलीस्ट फॉर अस एज अ ब्रांड, एंड आई थिंक जब हमने वेरियस फोरम्स में मैंने बाकी अपने ब्रांड काउंटरपार्ट्स के साथ बैठा उन फोरम्स में, जनरली आई थिंक द इंडस्ट्री इज सीइंग दैट द प्राइस पॉइंट्स आर मूविंग अप. What was mid earlier is moving towards the high segment, and what was low earlier is moving towards the mid segment. ये तो हम definitely देख रहे हैं across the brands in the four-wheeler segment, and certainly जिनके पास वो उस तरह की positioning है, जिनके पास उस तरह के models हैं, they are certainly seeing the benefit of it. We have certainly seen the benefit of it. If we look at our Nexon portfolio, or if we look at our Harrier Safari portfolio, we have a very high proportion of our sale coming from the high-end trims. And पिछले एक साल में हमने ये जो मूवमेंट देखा है, अपवर्ड मूवमेंट, ये पिछले एक साल में ज्यादा ही हुआ है. एग्जैक्टली सर. सर लौट के आते हैं काजीरंगा की तरफ. अब जो ये एडिशन है, ये क्या लिमिटेड एडिशन ऑफरिंग होगा या इट विल बी अगेन गोल्ड एडिशन, डार्क एडिशन की तरह ही इट विल बी ऑन सेल अक्रॉस probably in the entire year and years to come? I think that it is going to be a special edition, which simply means that everything has a cycle for us, and there is a calendar of activities that we plan, and when we do the next inspiration, right, then we will introduce the next inspiration and probably ease out the Kaziranga, right? But we do believe that जब तक काजीरंगा में जान है, जब तक कंज्यूमर्स को वो स्टोरी पसंद आएगी, there is sufficient opportunity for consumers to buy into the Kaziranga edition. बिल्कुल सर. सर थोड़ा सेल्स की तरफ आते हैं, बिकॉज बोथ पंच एंड नेक्सॉन, इन दोनों ने इतना ज्यादा वॉल्यूम दिया है पिछले कुछ महीनों में कि हमने देखा है हाउ टाटा मोटर्स हैव इवॉल्व्ड इन द एंटायर मार्केट स्पेस. तो सर हाउ आर यू वर्किंग बैक एंड टू मीट डिमांड, क्योंकि वॉल्यूम्स 10,000 से ऊपर दोनों के चल रहे हैं मंथ ऑन मंथ. It's new for Tata Motors, but again, while it's fresh, but consumers के लिए भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. So how is it going in the production? First of all, no longer new. 1.5 साल से चल रही है ना? So I think we all can stop saying that it's new, because it's 1.5 years have passed that this train has been chugging along without any kind of break and just going up and up and up in that sense. So I think one of the reasons, Anirban, is कि जो हमने ये जो सप्लाई का सिचुएशन है, हमारी जो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है, हमारे जो बैकएंड है, has been very agile, very nimble. I think हमने काफ़ी अच्छा मैनेज किया है, इसलिए we have been showing the constant upward trajectory month after month. And even in a Nexon, for example, from where we were earlier to where we are now in terms of supply, there used to be a 6-month, 7-month waiting for Nexon. But even now, across our cars, the waiting period is anywhere between 3 months to up to 8 months, depending on the model, depending on the specific trim, etc. But having said that, I think that we have managed it certainly quite well. We are very pleased with the way we have managed it, and have been able to lower the waiting periods for some of the older models. And of course, now with Punch also, we're ramping up on the capacities and across the board, and we hope we'll be able to make the customers a lot more comfortable, certainly compared to the rest of the industry as far as waiting periods are concerned. बिल्कुल सर, we also expect the same. Sir, final question on the Kazirangas. चारों गाड़ियां दमदार लुक्स के साथ आने वाली हैं. आपके लिए which one of these is your favorite pick? My favorite, all of Yes. them. How can you tell the family member to choose which son is or daughter is the most favorite? But it all depends on your personality, and Irvan, it depends on of course what you need it for, what you're buying it for, what kind of budget you have. But for me personally,
The Punch is a great favorite of mine as a car. 5-star safety rating, beautiful performance, upright sitting, fantastic view. I always say that this is the car that I would, if my wife or my daughter want a first time, my daughter when she starts driving or as a first time car, it's a wonderful car. It's from all four angles: design, looks, colors, available features, safety. And for me personally, I think I find the Harrier a very very powerful looking car. मैं हमेशा कहता हूँ कि that car is a monster, it's a beast. जब उसके आगे आप खड़े होते हैं ना, तभी आपको कोई भी फोटोग्राफ जो हम पब्लिश करते हैं does not do justice to the handsomeness, the rugged handsomeness of the Harrier. Exactly. Obviously, पंच का जो आपने भी statement दिया, that is so true. We are seeing लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं for all the qualities it has. Sir, thank you so much for joining with us. We are looking forward to having our first go at the Kaziranga edition. Thank you so much for your time. Thank you, Nirban. Thank you.